वेलकम बैक टू एट अ ग्लांस विद नेहा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंफॉर्मेटिव। मेरे साथ में आज हैं देव, जो आपको बताएंगे कि जर्मनी में पीएचडी करने आप कैसे आ सकते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। और आप लोग को पता होगा कि जर्मनी आजकल काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो सब रीज़न आज हम जानेंगे देव से। सो हेलो देव, welcome to my channel. Yeah, thank you. It's nice to be here. Okay. So आप यहाँ पे PhD करने आए, right? Yeah. So क्या आपका सब्जेक्ट है, किस में आप परस्यू कर रहे हैं यहाँ पे PhD? अच्छा, okay. So मेरा PhD का टॉपिक है theoretical physics और specifically वो है cosmology. The cosmology one deals with the physics of universe, black holes और ऐसे celestial objects. तो मुझे एक specific topic पे thesis बनानी है within the duration of my PhD. Okay. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने जर्मनी को क्यों चूज किया? Why not only India? Yes. Or some other country? Okay. So there are many reasons for this. जो उसमें से एक है I already knew my professor before coming here. मैंने उनके साथ पहले last year work किया था and I liked him a lot and like that's basically one of the best reasons why I chose to come here. और दूसरा reason है academic atmosphere, which is one of the excellent atmospheres in world. In terms of like if you are looking as a PhD student, I also get a stipend which is healthy, as compared to India or other Asian countries. तो ये भी एक benefit है और university also has some nice reputation in theoretical physics. So ये भी एक reason है. So आपका इंडिया में educational background क्या रहा है इससे पहले? Okay, so मैंने इंडिया में मैंने इंडिया में integrated masters in science किया है. I recently graduated from National Institute of Technology 3 months back. So like उसमें मेरा focus था theoretical physics and और उसी टाइम मुझे इंटरेस्ट आया कॉस्मोलॉजी में and like as I started digging the topic deeper, I realized that like I want to study it in further depth. तो इसलिए मैंने PhD का डिसीजन लिया. तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की. अगर आपको कुछ लगता है कि आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं सो प्लीज़ डू इट. एंड अगर आप लोग को लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप अपने कमेंट्स में जाके राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट्स को एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट. सो हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी? क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है यहाँ पे? अगर किसी को एडमिशन लेना हो PhD में तो कैसे आए यहाँ पे? सो बेसिकली आपको सबसे पहले PhD के लिए चाहिए फंडिंग. सो फॉर फंडिंग देयर आर मैनी सोर्सेज. For example, you have some external scholarship. आपको यूनिवर्सिटी की ग्रांट भी मिल सकती है. You also can get some personal funding from your supervisor. So मेरे को इसमें से एक नेशनल स्कॉलरशिप जर्मन की DAAD स्कॉलरशिप उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया. So like once I got the scholarship, for scholarship you have to clear an interview, submit your documents. So ये हुआ. उसके बाद I had to get the approval letter from my supervisor, which is my PhD supervisor. So वो लिया मैंने. तो ये दो main these are the main factors you have to take in mind while getting an admission. तो ये प्रोसेस होने के बाद मेरा वीज़ा कंफर्म हो गया. सो उसके बाद फर्दर प्रोसेस के लिए मैं अभी भी यानी ongoing है processes. You have to get enrolled, you have to submit your original documents in the university. So ये अभी भी चल रहा है. So
In order to get the PhD, in short, you have to get the scholarship, get the funding. और फंडिंग के बाद आपको अपने पोटेंशियल सुपरवाइजर की अप्रूवल चाहिए. सो इफ़ यू टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ आपको वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए या PhD के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं? सो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले तो आपका मास्टर्स डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट और your degree certificate if you get one before applying for the visa. और दूसरा है आपके transcripts right after your 12th standard to the end of your master's semester, all the transcripts. Then you need the proof that you will be sufficiently funded by any kind of source, like I said in the previous question. आपको scholarship के documents भी submit कर सकते हो आप. सुपरवाइजर लाइक यूनिवर्सिटी ने आपको फंडिंग देने का डिसाइड किया है तो वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हो. देन आफ्टर दैट यू नीड इंश्योरेंस ऑफ कोर्स in order to step foot in the European country, any of the European countries, you need to have an insurance beforehand. So आपको वीज़ा इंटरव्यू के पहले इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा. This includes travel insurance as well as health insurance. So वो भी आपको लेना पड़ेगा. Then you need to have a proof of accommodation. So जिस दिन आप जर्मनी में लैंड करने वाले हो उस दिन से मिनिमम 1 month के लिए like you will be accommodated somewhere. Either an apartment or an Airbnb or anything like that. So आपको वो भी proof submit करना है. So ये accommodation आप कहाँ कैसे सर्च करते हैं, वहाँ कैसे proof provide करवाते हैं? Okay, so accommodation search के लिए there are many apps, especially for Germany. For example, there is WG Gesucht. There is also a local eBay, an eBay app, like I don't remember the name. और आप अगर यानी अपार्टमेंट आपको नहीं मिल पाते तो you can also apply for some private accommodations like Airbnb, A&O, hostels. आप अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी कांटेक्ट कर सकते हैं if some vacancy is available. I think like most of the process online होती है, आपको accommodation online ही मिल सकता है. तो जब आपको वीज़ा मतलब कितने ड्यूरेशन में अप्लाई करने के आपको वीज़ा अप्रूव हुआ एंड जो आपको वीज़ा मिला वो कितने टेन्योर का मिला? ओके, सो मेरा वीज़ा टाइमलाइन इस तरह से है. मैंने अप्लाई किया था इन द मिड ऑफ जुलाई. मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट किए. आई टुक एन अपॉइंटमेंट फॉर द VFS Mumbai, which basically takes all your documents and submits to the German embassy. It's like it's a kind of third party. So मैंने वो अपॉइंटमेंट बुक किया और मेरा अपॉइंटमेंट था अराउंड 28 जुलाई. So I gave all of my original documents to the VFS और I think उसमें 1 week का उन्होंने टाइम लिया to process all the documents. और फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट कलेक्ट किया in order to stamp the visa. So that also, and the delivery of that passport took around 3 to 4 days. So all in all around 2 weeks में मेरा visa after the interview मेरा visa मेरे पास था. Okay, and यहाँ पे आने के लिए is it compulsory that you have to give IELTS or did you give the IELTS or not? Okay, yes, I did give the IELTS exam, but that's because I wanted to apply to multiple countries, including Canada and US. So in order to apply to those countries, you need, of course, an IELTS exam certificate. But for German PhD programs, और especially जिसमें मैंने apply किया है, you do not need an IELTS score. And probably for masters you may be needing, but I'm only talking about the doctoral admission. So उसमें IELTS का certificate नहीं चाहिए. But maybe just to make your application stronger, it's better to give the IELTS. Yes, of course, yeah. And English proficiency certificate will always give a boost to your application. So it's always better to give an exam. Yes. And जो यहाँ का
आप जो परस्यू कर रहे हैं PhD, मीडियम इज इंग्लिश और इज इट इजी टू फाइंड these kind of courses in English or what is your opinion? How is the situation here? Okay. So first मेरा यानी मेरे डिपार्टमेंट का मीडियम इंग्लिश है, यानी the way we communicate, like in the language we communicate, we give presentations, we have lectures, so सब कुछ इंग्लिश में है. But it specifically depends on the department and also on the research group. क्योंकि मेरे रिसर्च ग्रुप में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत है, सो इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी दैट नॉट ऑल you have to speak in English because not all will understand German. So but मैंने ये बहुत सारे रिसर्च ग्रुप देखे हैं जहाँ पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जर्मन भी है. So all in all it depends on the department. I mean, अगर किसी को यहाँ पे PhD करने आना हो देन वो फाइंड आउट कर सकते हैं इंग्लिश को, अपने सब्जेक्ट जो भी है वो इंग्लिश में यहाँ पे उनको मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि जर्मनी है तो ओनली जर्मनी यहाँ पे चलेगी. इंग्लिश में इंग्लिश में डेफिनेटली आपको अपना रिसर्च ग्रुप मिल सकता है. यू जस्ट हैव टू फाइंड राइट डिपार्टमेंट एंड राइट योर इंस्ट्रक्टर्स एंड गाइड. You have to spend some time in doing research and like finding about the background of your interested research group. आपको मिल तो सकता है यहाँ. that's good then. Okay. So जो आपकी PhD होने वाली है वो कितने साल की होगी यहाँ पे? Okay, so मेरा PhD duration, like it's already mentioned in the, it has to be mentioned in your contract even before you apply for the visa. Okay. So मेरा PhD duration है 3 years. But in extreme cases where I am not able to finish my thesis and submit it on time, एक और possibility है extension की, 1 year extension. But that depends on your supervisor. Okay. So if your supervisor agrees, then आपको 1 year का extension मिल सकता है. But originally it's of 3 years. So next हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जर्मनी में PhD करने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं. Okay. So as far as I know, majority of the PhD students want to pursue a career in research in academics. So सबसे पहला benefits तो यही है. It's not a benefit, it's a kind of compulsion that in order to be a faculty somewhere or in order to be a researcher, आपको PhD तो चाहिए ही. So एक टाइप का बेनिफिट ये है कि आप अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट कंसिडर होंगे जहाँ भी आप जाओगे. तो अगर आपके पास PhD है तो सबको लगेगा कि you are an expert in your particular topic, and you will be given priority in a lot of jobs, like especially in research career jobs. You will be given priority over master's students. Of course, you will be given priority over other PhD students if you have done your PhD in a nice and hardworking manner. So ये भी एक benefit है. और ये तो जैसे स्कोप हो गया, एक स्कोप हो गया PhD करने. ये तो आप कहीं से भी करो, जर्मनी में करो या कहीं से भी करो इन द वर्ल्ड, तो वो तो एक PhD का बेनिफिट हो गया. बट अगर आप जर्मनी से कर रहे हैं तो आपको क्या एक एक्स्ट्रा एज मिलता है यहाँ से करने से? आपको क्या बेनिफिट मिल, जैसे अर्लियर वी डिस्कस्ड दैट यू आल्सो गेट अ टाइटल एज अ एम्प्लॉय, बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलता है, और स्टाइपेंड आपको यहाँ पे, हाउ मच स्टाइपेंड आर यू गेटिंग हियर, इज दैट इनफ और नॉट? और उसके अलावा अगर कुछ बेनिफिट है तो प्लीज डू गेट इट. सो सबसे पहले स्टाइपेंड आपको मिलता है. So for my case, I get monthly stipend of 1200 euros. Okay. और मैं जिस सिटी में रहता हूँ आकन, which is a kind of rural city, और वहाँ पे expenditure बहुत यानी living expenses बहुत कम है. So I can survive pretty good using the stipend. In addition आपको semester ticket भी मिलती है from the university. Okay. Using this semester ticket you can travel throughout your state. Okay. Without any cost. Whether you want to travel by train or bus or tram or anything. So ये एक benefit है. Also you have
like it depends, like you can have insurance as well from the employer, but that depends on the employer. So मेरे केस में मेरा employer है DAD scholarship, so उन्होंने मेरे को पहले से insurance भी दिया है, so I don't have to spend additional money for the insurance. That's also benefit. Then you And if you are getting a good amount as a stipend, then you don't have to look for a part-time job. yes, of course, yes, you are in Germany you are a PhD student is considered as a full-time employee, and you have to work for around 40 hours per week, so आपको enough stipend मिलता है, so that you don't have to look for other options or other part-time jobs. So I think I have covered all the questions. Just उसके बाद में जस्ट स्कोप पे अगर हम एक बार फिर से डिस्कस कर लें कि PhD का क्या स्कोप है, अगर PhD कोई परस्यू करना चाहता है तो उसके बाद में कौन कौन से एरियाज खुले हैं उनके एक्सप्लोर करने के लिए, या एज अ करियर अगर कोई इसको बाद में देखना चाहे तो कैसे देखें? Okay, so PhD के बाद scope, there are in terms of scope there are enormous infinite scopes. सबसे पहला scope मैं तो कहूँगा research. So after you get your PhD, you are free to do your research in the field you like, and you can join as a research assistant in a particular university. You can also pursue your postdoctoral studies after your PhD, and you can thereafter have a nice and steady job as an assistant professor and subsequently a professor in university. But that's about research. If you want to switch your field to let's say industry, so आप वो भी कर सकते हैं. कॉर्पोरेट में अगर जाना चाहें. Yes, so and that depends on the way you finished your PhD. So आप अपने PhD के ड्यूरेशन में बहुत सारे दूसरे भी skills सीखते हैं which are extremely beneficial to pursue an industrial career. So मैं कहूँगा कि industries में भी even banking sector उसमें भी PhD स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है, so उसमें भी स्कोप है. Okay, so yeah, I think I have covered all the questions जो भी मैंने सारे नोट डाउन किए थे. So अगर I'm saying again, अगर आप लोग का फिर कोई क्वेश्चन हो तो please do let me know in the comment section. I will try to answer your questions. So thank you so much Dev for your time. Thank you very much. That was pretty much about this video. एंड आई होप ये काफ़ी सारे PhD एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो भी जर्मनी आना चाहते हैं PhD परस्यू करने के लिए. सो या फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बाय.